First of all, mineral exploration is searching for evidence of mineral. तो mineral अच्छी ना नहीं तार evidence को search करिया process को कहते mineral exploration. Generally कौन था minerals का subsurface रहते हैं तो हमें तो जो present अच्छी ना नहीं तार evidence जो को जो को कहते mineral explorations. दो टाइप होते हैं geophysical, geochemical. Geophysical process तो तुम्हें last class में पढ़ी छो resistivity method, self potential method, gravity method, ये सब होता है geochemical exploration को हमें पढ़िबा अछि. Geochemical exploration. So geochemical exploration or prospecting for minerals includes any method of mineral exploration based on systematic measurement of one or more chemical properties of a naturally occurring material. तो कौन होता है ना उची geochemical exploration रे हमें कौन करते हैं ना systematically measurement of one or more chemical properties of a naturally occurring material. तो naturally occurring जो material है तार हमें कौन करते हैं chemical property measure करते हैं तो सेटा को कहते हैं geochemical explorations. तो chemical properties कौन ना हमें जो rock किंबा soil तो different जो sample नियंती देखते कि सेठे geochemical anomaly अच्छी ना नहीं the purpose of measurements जो हुए the discovery of geochemical anomaly and second is an area where the chemical pattern indicates the presence of ore in the vicinity. तो हमें जो sample लेके हमें जो test करते देखिए जो mineral में हमें खोजुଛନ୍ତି सेठी anomaly अछि ना नहीं anomaly कौन आउ जो chemical pattern particular chemical pattern show करूचे ना नहीं हमें सेटा देखो तो what is geochemical anomaly और chemical pattern कौन show करे चलो आपको पढ़े. So हमें जो exploration में किसी terms यूज करते जो उड़ा से तो मोस्टली familiar अच्छो तो सेटा का आउटर कहवा तो what is ore तुम्हें आंसर the rock or material which are mined for a profit. तो रॉक और जो मटेरियल को या मिनरल को हमें प्रॉफिटेबली माइन करते ताको कहते ओर. देन प्रोस्पेक्ट हैला जदि गोटे मिनरल डिपोजिट्स अछि हाउ हमें कहू ना टेस्ट होची एक्सप्लोर करके जानले जे देयर इज ए पोटेंशियल ऑफ दैट डिपोजिट टू बिकम ए माइन. तो ता जोटू कि हमें को कहबो डिफरेंट ओर को एक्सट्रैक्ट करि परिबा ताको कहते प्रोस्पेक्ट. Prospect है ना potential for development. Prospect. Similarly, mineral occurrence है ना mineral occurrence है ना anomalous concentration of mineral of interest. को कहते mineral occurrence. सेंते grade तो मैं आगरो पढ़ी थी mean of concentration of mineral of interest. जो mineral में कुछ जो तार concentration कितने होची तो केमती generally कौन कहते ना weight for volume रे हमें आपको determine करते grade. So what is cutoff grade? Cutoff grade तो जानितो ना lower limit of concentration of acceptable for profitable mining. तो suppose हमें iron पाउछंती तो iron हमें जोटी पाइले सब गोटे जगह रे तो गोटे जगह रे होची 40% होची गोटे जगह रे 60% होची गोटे जगह रे 70% होची गोटे जगह रे 80% होची. तो हमें तो जेतो कौन करे ना गोटे cutoff grade को देखा जाए जो कटअफ ग्रेड है मिनिमम कंसंट्रेशन जति थे हमें ताको प्रॉफिटेबली माइन करि परिबा तो हमर माइनिंग कॉस्ट टू हमर जो हमर जो बिकी सरला पे ता कॉस्ट अधिक हबो ता कोन कटअफ ग्रेड लोअर लिमिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टेबल प्रॉफिटेबल माइनिंग. तो जति सपोज 60% जदि गोटे आयरन अछि गोटे ओर रे ताकू जदि माइन करिया हमें जेती टंका खर्च करछे माइन डेवलपमेंट पाई बा एक्सट्रैक्शन पाई ताठो हमें अधिक प्रॉफिट पाई पारुचंती बिकी देन ताको कहते कट ऑफ ग्रेड. Similarly, host of the lithium unit which contain the ore को जो रॉक रे जो lithium unit रे ore होची थाए ताको कहते हैं होस्ट और सराउंडिंग रॉक को कौन कहते ना होची
country rock which has no commercial value or little commercial value. Biশেষভাবে no commercial value ଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି host rock which ହେଉଛି country rock which generally surrounds the host rock. Then background value ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ important background value. So background value otherwise known as Clark value is average abundance in the crust. तो तुम्हें जदि suppose copper खोजुଛ तो copper ର average abundance in the crust को कौन कहती ना background value. तो जदि आमे कौन करिया ना एवरेज abundance ऑफ क्रस्ट ना बैकग्राउंड वैल्यू तो बैकग्राउंड वैल्यू रो आइदर कम कि अधिक अमाउंट रो जदि आमे गोटे सैंपल आमे डिफरेंट सैंपल लेते एक्सप्लोरेशन टाइम रे तो जानिया को कहले जे बैकग्राउंड वैल्यू रो कम कि अधिक अमाउंट रो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर अछि ताको कौन कहती ना एनोमली. जनरली आमे एक्सप्लोरेशन केस रे कौन देखंती ना the anomaly should be greater than the background value. कम को भी कही परिया किबा अधिक को भी कही परिया किंतु जनरली आमे जेतबो एक्सप्लोरेशन केस रे हमर अधिक दरकार कॉस्ट एवरेज जति की अछि ताटू अधिक हेले से आमे आनिबा जे एठी मिनरलाइजेशन प्रोजेक्ट अछि तो एठी आमे देखिबा और डिपॉजिट्स अछि ना नहीं तो सेति में हमें अधिक नमुने दैट इज जनरली 3 टाइम्स ऑफ द बैकग्राउंड वैल्यू दैट इज कॉल्ड एनोमली. This is called anomaly. बुझिए ना. Then हमें कौन करूँ डिफरेंट सैम्पलिंग सैंपल्स कौन करूँ ना नहीं कि ताको केमिकल एनालिसिस करा जाए तो को सैंपल लिया जाए important what should be the sample what should be the element to be analyzed को element को हमें analyze करिया को sample second different sampling technique तो को डिपॉजिट्स ପାଇଁ को sampling technique यूज कर हमें तो samples can be of different types. One is bedrock sample. So bedrock sample कौन ना generally the samples which are exposed to the surface is the most preferred. तो जो sample कौन अछि ना expose है कि surface को ताको कौन कहया कहते ना bedrock sample and most preferable one कौन पाए कि जदि एठी और mineralization अछि हमें डायरेक्ट इंडिकेशन पाई परिबा कोसी अन्य फैक्टर एफेक्ट करिवो नाही ताको कहते bedrock sample. तो ओवरबर्डन आमे जानते जदि ओर अछि ता ऊपर कोन अछि ना soil अछि कि अदर रॉक अछि ताको कोन कहते overburden that is any material that lies over the bedrock বা ore ताको कोन कहते ना overburden. आमे जानते overburden को नै कि भी सपोज आमे आपको बढ़िया डिस्पर्शन है कि कोन करबो ना जदि एठी कपर अछि कपर डिस्पर्स है कि एठी तार ट्रेस मिलिबो तो ताको कहते overburden. हमें वो जगह रे overburden को भी नै कि यूज करि पारो सैंपल वया यूज करि पारो एमिति कि विशेष करी गोशान केस तुम जानिछ कौन ना गोशान जोटी अछि सेठी हमें रेसिडुअल डिपॉजिट्स गुड़ा तो चांसेस पाइबा जेमति कि रेसिडुअल आयरन हो एल्युमिनियम हो विशेष करके एल्युमिनियम थे गोशान अछि माने एल्युमिनियम प्रेजेंट होवार चांसेस आर देयर. देन होछि हमरो कौन ना जो थाए सल्फाइड डिपॉजिट्स गुड़ा सेकेंडरी सल्फाइड एंड डिपॉजिट्स गुड़ा एगुड़ा पाइबार चांसेस थाए तो हमें ओवरबर्डन को लेके भी सैंपल वया यूज करा जाई पारे. Then soil sample soil can be formed by residual process and transported process. Then vegetation तो जदि कौन अछि ना गोटे ओर अछि से कौन हला ना दाउछि सेटू generally soils are formed by the weathering product of the rocks तो एटू वेदर है कि ए सॉइल फॉर्म होइछे तो सॉइल ऊपर डिफरेंट माने गछ বা वेजिटेशंस गुड़ा अछि तो जो जदि सॉइल इज एनरिच्ड इन दोज दैट ओर बा दैट मिनरल तो से कोन करिवो ना गछर रूट द्वारा से माने कोन करिवे से मिनरल को नेबे देन रूट देन ट्रंक स्टेम्स अल्टीमेटली कोन हो ना लीव्स रे से एलिमेंट रो ट्रेसेस गुड़ा में पाइबा
देन जेते कौन करवा ना से आइदर आम हूँ गचर डिफरेंट पार्ट्स को सुखिकी डायरेक्ट टेस्ट कर अदरवाइज जदि पत्र कौन अल्टीमेटली लास्ट कौन पत्र कनसेंट्रेट हम पत्र सुखिकी जड़ीगला जड़ी कौन हम ना ये ह्यूमस भाव ये तार एनरिचमेंट देखो कहते वेजिटेशन तो सो समटाइम्स vegetation also can be used as sample हमें डिटेल आपको पढ़ेगा और if the element को analyzed is volatile जो हमें यदि element कौन करते हैं जाकु analyze करियार अच्छी से volatile अच्छी then instead of soil जगह रे हमें कौन करिवा ना soil paper को यूज करा जाए as a sample. Then comes to rock samples, the types of rock samples. So first one is grab samples. जेमिति नाम कराए अछि यार grab माने कौन भरिवा तो generally these sample rocks are materials from a confined area that is less than 1 foot. तो गोटे confined area रो ये sampling करा जाए grab samples जेमिति तुमे कौन piece को grab करो सेमिति the rock samples should be a single piece or chunks, generally large piece, which represent single type of rocks or mineralization. तो गोटे और गोटे सपोज रॉक टे अच्छे तो गोटे सिंगल पीस लार्ज पीस को कौन करा जाए ना ग्रैब करा जाए तो तार से जो सैंपल लिया जाए तो कहते हैं ग्रैब सैंपल्स. Then second type of sampling is channel group or trench sampling. तो एक चैनल ट्रेंच का ग्रुप सैंपलिंग कोडी करा जाए ना जोटे की मिनरलाइजेशन मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म तो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन जना यूनिफॉर्म थिबो जेमति की ओर बॉडीटा जनरली इन बेडेड फॉर्म और वेन फॉर्म और बैंडेड फॉर्म रे थिबो तो एक फॉर्म रे होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरलाइजेशन इज यूनिफॉर्म. Generally width is generally 5 to 10 centimeter. This is 5 to 10 centimeter. Depth is 1 to 2 mm and the samples generally which will distance 1 meter in length. से कौन करेंगे ना ये जो यूनिफॉर्म थी वो से भीतर सैंपल कौन करेंगे ना कलेक्ट करेंगे जनरली होची गोटे मीटर सैंपल करते पर्टिकुलर डिस्टेंस रे लंबा जो बेडेड डिपोजिट्स थाए बहुत दूर पर्यंत एक्सटेंड थाए तो होची पर्टिकुलर इंटरवल रे एमती से कौन करेंगे ना ग्रुप बा ट्रेंच आकार रे कलेक्ट करेंगे जो सैंपल कलेक्ट करेंगे से कौन थी ना वो जनरली 5 to 10 centimeter in width 1 to 2 mm in depth and generally 1 meter in length weigh around 1 to 2 kg. तो चैनल आकार रे सैंपल करा जाए. दिस इज चैनल सैंपलिंग बा ट्रेंच सैंपलिंग. देन चीप सैंपलिंग को कैसे करा जाए ना जोटी यूनिफॉर्म रे डिस्ट्रीब्यूशन न थाए और पूरा और जनरली इन डिसेमिनेटेड और बॉडीज कौन करा जाए ना स्मॉल पीसेस ऑफ सैंपल बा चीप रॉक्स ऑन ए रेगुलर ग्रिड पैटर्न. तो गोटे जो डिपोजिट्स अच्छे जब डिसेमिनेट फॉर्म रे अच्छे तो डिफरेंट ग्रिड पैटर्न कौन करा जाए ना चूज करा जाए गोटे पर्टिकुलर ग्रिड करिए ग्रिड टू पर्टिकुलर इंटरवल में कौन करेंगे ना छोट छोट चिप आकार रे कलेक्ट करिए जो तुम चिप्स देखिछो घर जनरली कंस्ट्रक्शन यूज करा जाए सी साइज रो सैंपल कौन करेंगे ना कलेक्ट करेंगे डिफरेंट पर्टिकुलर इंटरवल में डेफिनेट ग्रिड पैटर्न रे ताको करिकी ताको कौन करा जाए ना लैबोरेटरी को पठा जाए तापर से जो मिनरल तुम एनालिसिस करिया पे चाहछो खोजुछो तार एनालिसिस करा जाए. जनरली चिप सैंपलिंग require low cost and less laborious than the channel sampling. Channel sampling कौन बड़ एरिया करा जाए आउ the sample size of the samples are large किंतु एटी छोटो छोटो सैंपल लिया जाए एंड पर्टिकुलर ग्रिड पैटर्न में करा जाए. देन फेस और मॉक और लंप सैंपलिंग एटी कौन करता है ना गोटे माइन फेस बा स्टोप जो कौन करा ना माइनिंग टाइम में माइन फेस बा स्टोप रू कौन करा ना जाए ना जनरली गोटे सोगल बा फावड़ा द्वारा
सैंपल कलेक्ट करा जाए आउ कलेक्ट करके कौन करा जाए ना एनालिसिस में पठा जाए ये प्रोसेसटा बहुत सिंपल थाए क्विक थाए आउ जनरल चीप प्रोसीजर थाए किंतु एटी कौन था ना एक्यूरेसी इज वेरी लो मॉडरेट इन केस ऑफ लॉन्ग सैंपलिंग कौन भाई माइंड केस बा स्ट्रोक को कौन करा सिंपल जे गोटे है मेकानाइज सोलर द्वारा वा पाउडर द्वारा से कौन करते हैं सैंपल कलेक्ट कर दिखती तो जदि गोटे तुम्हें जब आयरन माइन्स देखो डिफरेंट बेंच माइन होता है तो जो माइनिंग माने बुलडोजर खोल थाए तो सहीठू ही कौन करे ना सैंपलिंग कर दिखती कहते लॉन्ग सैंपलिंग So drill hole sampling is more convenient for determination of deposits boundary. Deposits boundary. Samples are usually collected beyond the wall of underground working with a constant cross section. तो सबुठु बेस्ट उपाय गोटे होची सैंपलिंग रो सेटा ड्रिल होल सैंपल्स तो ड्रिल होल सैंपल्स कोन ପାଇଁ इम्पोर्टेंट इट ଆମେ ଜାଣିଛୁ ड्रिल होल्स माने कोन आम गोटे पर्टिकुलर जो एक्सप्लोर कर गोटे एरिया पर्टिकुलर मैप आम कौन करवा ड्रिल करवा ड्रिल करके कौन कराए ना सैंपल्स नि जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग अच्छे आपको पढ़ा तो ड्रिल हूँ ड्रिलिंग सैंपल कलेक्शन सब बेस्ट एडवांटेजेस है आम कौन करा जदि ओर बॉडी अच्छी जदि कंटिन्यूअस ओर बॉडी अच्छी कि डिसकंटिन्यूअस ओर बॉडी अच्छी आम डिफरेंट डिस्टेंस पर्टिकुलर डिस्टेंस आम कौन कले ना ड्रिल कले बोरहोल्स गुड़ा ड्रिल होल्स गुड़ा कले तो आम कौन कर ना साइज आउ शेप ऑफ द ओर बॉडी को डिटरमाइन कर तो एमती से पेनिट्रेट कर तो ये कौन कर ना आम जापर जे जो सैंपल कलेक्ट करवा डेप्थ रे अच्छी जदि ओर बॉडीटा एमती ही था एठू आम जापर जे एमतीका ओर बॉडीर शेप बा साइज एमती अच्छी आउ लेटराल एक्सटेंट ऑल्सो जदि ये आम ड्रिल करवा डिस्टेंस आम ये कौन करवा ओर बॉडी पाइबानी तो आम जापर जे पर्टिकुलर डिस्टेंस पर्यंत से एक्सटेंड होइछि बुझला ता सहित कौन हम ना दिस वन फर्स्ट एडवांटेजेस था साइज शेप ऑफ आउ मॉर्फोलॉजी ऑफ द morphology of our body. This is the first advantage. Second advantage है geological structure and number of loads. तो जदि इटा फोल्डिंग जो और बोर्ड ये जो सपोज बेडेड डिपॉजिट्स अच्छे से तो सब सरफेस रे फोल्डिंग तुम्हें कौन ए ड्रिल होल जो सैंपल्स बाहर तुम से जानी परिबो जे हां इतनी डेप्थ ये एमती सेफ अच्छे तो ये हम जानी परिबो जे ये फोल्डिंग कि जदि फॉल्टिंग भी तो और बॉडीटा कौन जदि ये फॉल्ट ये कौन ऑफसेट ये और बॉडीटा तो इठू आम पर्टिकुलरली जानी जे सब सरफेस रे गोटे फोल्ड अच्छे कि फॉल्ट अच्छे तो डिफरेंट लोड्स भी जानी परिबा ये जदि गोटे लोड अच्छी आ गोटे लोड अच्छी तो आम ये सैंपल जानी जे डिफरेंट वन सिंगल नंबर ऑफ लोड्स ऑफ ओर बॉडी कि डबल नंबर जिते भी लोड्स ऑफ ओर बॉडी अच्छे आम डिटरमाइन कर थर्ड नेचर ऑफ होस्ट रॉक जो ओर बॉडी जो रॉक होस्ट कर तार नेचर जानी परिबा आम देन फोर्थ is equal to composition and grade of ore body. Then हमें जो ore body अच्छी तार composition भी जानी चाहिए further दाउ chemical analysis को से sample को then तार grade कितने concentration अच्छी भी सेटा भी हम करी परिबा ना determine करी परिबा. This is the advantage of कौन ना drilling hole samples but drilling hole sampling advantage. So various type of drilling अच्छे reverse circulatory drilling, diamond drilling, over drilling, jaw crusher तक percussion कही परियो percussion drilling, then rotary drilling. तो different type of drilling गुड़ा हम देखिए. तो reverse circulation drilling रे कौन था है
ना जनरली डबल बेरेल थाए तो गोटे बेरेल अच्छी ता भितर आउ गोटे बेरेल थी एमती बेरेल थाए कि ये ड्रिल बिटा अच्छे यू कैन ये तुम देखते ड्रिल बिट जोटा कि कौन करे ना रॉक को ग्राइंड करे तो ये इन केस ऑफ रिवर्स सर्कुलेटरी ड्रिलिंग कौन थाए ना ये आम जनरली एयर को पंप करा जाए तो वो एयर कोठी को पंप करा जाए ना साइड रे एयर पंप करा जाए ये जो होल गुड़ा अच्छे तुम्हें कौन कर ना कंप्रेसिव एयर पंप कल से कौन कला ना जहाँ भी ग्राइंड करूथो ये तले ड्रिल बिट अच्छे से ग्राइंड करुचे जहाँ भी ये पंप होचे पंप से कौन होला ना सैंपल कौन हम ना सेंटर देकी से कौन कर ना ऊपर को जीव आम डिफरेंट डेप्थ सैंपल को कलेक्ट करती या कहते रिवर्स सर्कुलेटरी ड्रिलिंग इन केस ऑफ डायमंड कोर ड्रिलिंग जनरली एटा जो ड्रिल बिटा थाए ये कौन था ना इंडस्ट्रियल डायमंड किंबा टंगस्टन कार्बाइड रो यूज थाए तो डायमंड कोर ड्रिलिंग रे कौन होता है ना जनरली कोर सैंपल्स को कौन करना है कलेक्ट करा जाए कोर सैंपल्स तुम्हें देखी थी जे जनरली कौन होता है ना एमती का कोर बैरल बा सिलिंडर सेट रो सैंपल कलेक्ट होते होल सैंपल है नॉट ए चिप के सेडिमेंट सैंपल होते हैं होल सिलिंड्रिकल कोर हिसाब से आसी थाए जोटू कि आम कौन करा जदि किसी ओ डिपोजिट्स अच्छी तार ट्रेसेस बा ओ डिपोजिट्स लो सरफेस स्ट्रक्चर को आम जानी पार इट इज द मोस्ट सुइटेबल सैंपल टेक्निक मान सब अधिक कौन कर क्लीयर एविडेंस आम यू पाइपर तो ये केस कौन था ना जो सब हूँ वेट थाए इंडस्ट्रियल डायमंड टंगस्टन कार्बाइड को यूज कराए जो जोटी कौन केबल जो जो लगी थे कौन स्विवेल स्विवेल कौन होता है ना जनरली कौन था ना रड टा कनेक्ट होके थाए तो हाइड्रोलिक सप्लाई थे देन डिफरेंट हाइड्रोलिक सिलिंडर्स रे देन ताको ड्रिलिंग रड्स तापरे एई कोर लिफ्टर टा लास्ट रे लगी थाए कौन है कोरिंग बीट ये तो अच्छी कटिंग बीट अच्छी ये कट कला देन जो को रॉक को कट करी जीवो ये कौन करिवो ना एक कोर सिलिंडर बा कोर बैरेल भितर कौन करिवो ना ये सैंपल टा जो कोर जनरेट हो से एक कोर सैंपल भितर रहिबो देन पर्टिकुलर मुझे लेंथ हो सारा पर से कौन करिवो ना कोर लिफ्टर टा बंद हो कहते कोर लिफ्टर ये बंद हो देन कौन करिवे ना ये कोर कोर बैरेल टा को जो ताको ऊपर को उठे कि कोर सैंपल को आम कलेक्ट करा जाए कोर सैंपल को कलेक्ट कर सारा पर कौन करा जाए ना कोटा हूँ अपवार्ड अच्छे सपोज मार्क करा जाए एटा जदि एमती एटा टॉप पोर्शन ए टॉप पोर्शन को जदि मार्क करा जाए टॉप पोर्शन तो तापरे जनरली आम कौन करूँ ना माइंड प्लानिंग होता है ना आम जानी दे और बॉडीटा एतिक डेप्थ रे अच्छे तार स्ट्रक्चर यार अच्छे केमिकल एनालिसिस पर जानी पारिबा जे एतिक कंसंट्रेशन बा एतिक ग्रेड ऑफ और डिपोजिट्स अच्छी एटा कहते डायमंड कोर ड्रिलिंग देन द सिंपलेस्ट वन इज ओगर ड्रिलिंग ओगर ड्रिलिंग तुम्हें देखी थी जिते कौन हुए ना कुछ प्लांटेशन जिते होता है से ओवर ड्रिलिंग करा जाए दीज आर जनरली यूज्ड इन सॉफ्ट सेडिमेंट्स यूज करा जाए पारे एंड दिस इज चीफ हाउ लेस कौन कहला कॉस्टियर थाए जेने सिंपली कौन करेंगे ना ये कौन सॉफ्ट सेडिमेंट्स एटा जो अच्छे कौन करेंगे ड्रिल करेंगे तो ड्रिल करेंगे जो सैंपल बाहर कलेक्ट करा जाए इट इज कॉल्ड ओगर ड्रिलिंग these are generally used for soft sediments जो भी अच्छे ताको यूज सेठी यूज करा जाए देन दिस इज रोटरी ड्रिलिंग में देखती हो जनरली कौन था ना ऊंची हाइड्रोलिक पंप्स द्वारा यूज करा जाए तले कौन बीट रोटेट करे जिते बीट रोटेट करे से सेंटर में कौन था ना डिफरेंट फ्लूइड कूलिंग फ्लूइड को कुछ कौन पुश करा जाए जो पुश करा जीवो से कौन करे ना कूलिंग फ्लूइड रो काम कौन ना
ये जो सैंपल्स गुड़ा कलेक्ट हुए ताको कलेक्ट करिवो धीरे ऊपर को जीवो कलेक्ट करिया ପାଇଁ सेकंड जो ड्रिलिंग बिट को होल करिया ପାଇଁ थर्ड जति गोटे बुझी सब सरफेस रे गोटे लेयर ऑफ वीक बा पोरस मटेरियल बा परमेबल मटेरियल अछि ताको स्टेबिलिटी देबो ए जो क्ले गुड़ा जो पुश करा जाए से कम करिवे ना ताको जनरली कवर करी के स्टेबिलिटी दियंती दैट इज कॉल्ड रोटरी ड्रिलिंग. So geochemical dispersion is the process in which atoms or particles move to a new location and geochemical environment is referred to as geochemical dispersion. तो जो प्रोसेस रे एटम्स बा पार्टिकल्स कौन करते हैं गोटे नुआ लोकेशन बा नुआ जियोकेमिकल एनवायरनमेंट को कौन करते ना मूव करते ताको कहते जियोकेमिकल डिस्पर्शन. This can may occur by mechanical, chemical, and biological process. The mechanical process involves weathering and erosion. Chemical process involves solution activity, or the biological process involves the intake of these elements by organisms like plants. तो ହଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଯୋଉ ଡିସ୍ପର୍ସନ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ର ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି. ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଡିସ୍ପର୍ସନ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡିସ୍ପର୍ସନ୍. ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡିସ୍ପର୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଜେନେରାଲି ଅଧିକ ଡେପ୍ଥରେ ହେଇଥାଏ. ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ହାୟର ଆଣ୍ଡ ଭେରିଏବଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରେସର ଟେମ୍ପରେଚର କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଏ. ପାଥୱେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଲିମିଟେଡ୍ ଥାଏ ଆଉ ଲିମିଟେଡ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ H2 ଆଉ CO2 ଥାଏ. ତ କେମିତି ଥାଏ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଉଛି ତୁମକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ. This one, this one is a mineralized zone. এটা ଗୋଟେ ହେଲା mineralized zone ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ କ୍ଲିୟରଲି ଦିଶିବ. ତ ୟାର ଯେ ଅଧିକ ଡେପ୍ଥରେ ଅଛି ଯେତେବେଳକୁ ଅଧିକ ଡେପ୍ଥରେ ଅଛି ତାର ହାୟର ଭେରିଏବଲ୍ ପ୍ରେସର ଟେମ୍ପରେଚର କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ. ତ କ'ଣ ହବ ନା ଯଦି ସରାଉଣ୍ଡିଂର ପୋରସ୍ ବା ପରମିଏବଲ୍ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳକୁ ଇଏ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜ୍ କରୁଛି ମାଗ୍ମାରୁ ଯଦି ରେସିଡୁଆଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ହେବ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ. ଯେତେବେଳକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ ସେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରକ୍କୁ ଆସେ. ୟାକୁ କହନ୍ତି primary dispersion which is generally near to the mineralized zone. এটা ହେଲା primary dispersion. In case of secondary dispersion ଯଦି କିଛି pathway ଅଛି like fractures, veins ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମିନେରାଲ ଗୁଡ଼ା ଥିବେ ମୋବାଇଲ ମିନେରାଲ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଦେଇକି shallow ଲେଭେଲକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ less than 1 kilometer depthକୁ ଯାଇକି ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା concentrate ହେବେ. ତାକୁ କହନ୍ତି secondary dispersion. So that's why secondary dispersion occurs at shallow depth, lower pressure temperature environment. There should be availability of pathway is higher and higher availability of H2 and O. ଯଦି ଅଧିକ H2 ଆଉ O2 ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡିସ୍ପର୍ସଡ ହେଇଯିବେ ବା ମୁଭ୍ କରିବେ. ତାକୁ କହନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡିସ୍ପର୍ସନ୍. ଏଠି ଯେହେତୁ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିପାରିବ ଯେତେବେଳକୁ କ'ଣ ନା ଓର ମିନେରାଲାଇଜେସନ୍ ଓର ବଡି ପାଖାପାଖି ଗଲେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପୋରୋସିଟି ଆଣ୍ଡ ପରମିଏବିଲିଟି ଓର there is no pathways to be there, low availability of H2O ସେଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ଡିସ୍ପର୍ସନ୍. ଯଦି ପାଥୱେ ଅଛି availability of H2O ଅଛି ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ପ୍ରେସର ଭେରିଏବଲ୍ କମ୍ ଅଛି ଲୋଅର ପ୍ରେସର ଟେମ୍ପରେଚର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଆଉ ଲାର୍ଜ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୁଭ୍ କରିବେ ତାକୁ କହନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡିସ୍ପର୍ସନ୍. ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡିସ୍ପର୍ସନ୍ ହେଇକି ଜେନେରାଲି କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୋଅର ବା ସାଲୋ ସର୍ଫେସ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି. Here you can see a ore body से कौन है ना वेदर है कि आम जानते वेदर जो रॉक बॉडी वेदर हुए कौन ना सॉइल डेवलपमेंट हुए. तो ये कौन है ना डिस्पर्सन देखी इन द सॉइल. फर्दर कौन है ना जिते को एटा ग्राउंड वाटर मूवमेंट है दैट मिनरल्स कौन है ना आसिक सीपेज एनोमली देखी एंड स्ट्रीम सेडिमेंट्स एनोमली फर्दर देखी. तो आम जानते एनोमली इज
generally higher or lower concentration than the background value. ତ ଯଦି କ'ଣ ହେଲା ନା ଓର୍ ବଡ଼ିରୁ ଡିସ୍ପର୍ସ ହେଇକି ଆସିକି ଆମେ ୱାଟରରେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିମ୍ ସେଡିମେଣ୍ଟସରେ କିମ୍ବା ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ସଏଲ୍ ଅର୍ ଭେଜିଟେସନରେ ଆଭରେଜ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଠୁ ଅଧିକ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଜିଓକେମିକାଲ ଆନୋମାଲିଜ୍ ବା different type of anomalies of that ore. Then comes to geochemical prospecting. So geochemical prospecting is concerned primarily with the examination of earth crust comprising not only the rocks but also the water, the gases with the view to locate mineral deposits. So generally earth crust किंबा rocks, waters ଆଉ gases को आमे generally कौन करवा ना examine करेगी mineral deposits को locate करिया उसको कहती geochemical prospecting. In geochemical prospecting, the primary object is to detect differences in the distribution of elements or dispersion of elements in the crust. तो आमे देखिया जे केते dispersion ହେଇଛି ବା जो distribution ଅଛି ore रो ବା element रो generally element रो केते amount रो differences ଅଛି तो आमे कोन करू ना सेटा dispersion रू ही जानि पारू तो सेबे दुईटा टाइप ऑफ dispersion आमे पढले गोटा ना primary dispersion और secondary dispersion आमे डिस्कस करले. In case of primary dispersion, generally are two types: chemical dispersion and mechanical dispersion. Chemical dispersion is generally formed by the chemical in equilibrium, and mechanical dispersion it depends upon the host rock on which magma is emplaced. So host rock ର porosity permeability ଉପରେ depend करे. जदि एटी गोटे host rock अछि magma emplaced ହେଲା तो जनरली जो यदि पोरस और परमेबल थिबो तो रेसिडुअल जो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड किंवा रेसिडुअल माग्मा से कौन करिवे ना से कंटेंट ऑफ को जिवे तो केते एक्सटेंड पर्यंत से माने डिस्पर्स हेबे बा प्राइमरी डिस्पर्सन सेटा डिपेंड करे ना होस्ट रॉक ऊपर. देन सेकेंडरी डिस्पर्सन हमें आनिसेंती जनरली शैलो लेवल पर्यंत देखा जाए आ पाथवे थी अधिक थिबा दरकार H2 और O2 concentration अधिक थिबा दरकार. Generally, the chemical dispersion of secondary dispersion depends upon the solubility. जो element को आमे देखुछंती traces पाइबा से elements of solubility केते यदि अधिक soluble से अधिक दूर जाय migrate करिवो यदि less soluble से अल्प दूर पर्यंत migrate करिवो और तार mechanical dispersion depends upon weathering and erosion. केते extent पर्यंत weathering और erosion होछि जदि अधिक weathering और erosion अधिक अछि तार डिस्टेंस अधिक थिबो ଆଉ ଯଦି weathering by erosion कम अछि then ସେମାନେ कम dispersion देखैबे. What are the factors affecting dispersion? The dispersion depends upon the affinity of the elements. The जो element पड़छो तार affinity towards the minerals कौन जेमति कि यूरेनियम और थोरियम has affinity towards zircon. तो सेमति का कौन करबा निकल is affinity towards कौन करबो ना olivine. तो olivine ने कौन ना निकल देखा जाए तो जदि आमे कौन करबा ना olivine is prone to weathering से कौन करबा ना weathering की अधिक डिस्टेंस पर्यंत निकल मूव करिवो तो आमे सेटू तार मिनरल एफिनिटी टू आमे जानि परिबा जे तार कुछि डिस्पर्शन केते हेबो. सेमि डिस्पर्शन अफेक्ट्स बाय द एनवायरमेंटल कंडीशंस तो आमे एनवायरमेंटल कंडीशन ऊपर भी डिस्पर्शन डिपेंड करिवो लाइक ऑक्सीडेशन फेवर्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट्स तो जिते ऑक्सीडेशन अधिक हो सल्फेट्स कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली अधिक हेबो. Then dispersion also depends upon the mobility of the element. So what is the mobility of the elements? The mobility of the elements depends upon how far distance a element can move. तो copper is immobile in calcareous environment. तो जो mobility है ना depend करे different environment condition ऊपर जेमिति कि copper कौन था ना calcareous environment रे immobile था while lead and iron are immobile in both silicates and calcareous environment. तो both calcareous और siliceous environment रे कौन था ना lead और iron कौन था ना immobile था.
So mobility of an element is the response of an element for dispersion process is governed by its mobility. That is the ease with which it can move in any geochemical environment. So geochemical environment केते easily से move होचे तब कहते हैं mobility of the element. Depends upon the mechanical properties of the mobile phase and factors such as viscosity of the magma, magma viscosity କେତେ ଅଛି, solution, magma in solution, the size, shape and density of the plastic grain also it depends upon. तो जो grain size ଅଛି ଯଦି ଅଧିକ size ଅଛି ବଡ଼ ଅଛି plastic grain then ସେ ଅଧିକ distance ହେଇପାରିବନି. This shape କ'ଣ ଅଛି ନା ଉପରେ ବି depend କରେ. जो density ଅଧିକ ଅଛି ସେ settle କରୁଛି ଅଧିକ distance ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ move କରିବ ନାହିଁ. ତ mobility of an element depends upon the environment and also the size, shape and density of the plastic grains. So remember one thing that mobility is not an absolute behavior, it is a relative property. So mobility of different elements is relative, not an absolute. So mobility also depends upon ionic potential of an element. So ionic potential is the ratio of ionic charge by ionic radius. याको कहते हैं ionic potential. तो ionic charge और ionic potential जो ऊंची कौनता है ना Z by R. So Z by R if it is less than 3, then it is the more element is hydrated and soluble cations. माने hydrated and soluble in nature. ଯେମିତି कि ଅଛନ୍ତି barium, lead, strontium, manganese, iron, copper, manganese एमाने generally hydrated and soluble cations. In case if it is 3 to 7, it is insoluble oxides and hydroxides. Generally, thorium, zircon, titanium, manganese, arsenic, iron, aluminum, एमाने कौन था ना insoluble oxides and hydroxide form में देखा जाती. If the Z by R by ionic potential is more than 10, then it is some soluble complex anions. The anions हुआ generally कौन था ना एक होची एक form में देखा जाती. But Z by R तांकर by ionic potential is greater than 10 I. Namely sulfur, nitrogen, phosphorus, carbon, these are all in ionic potential more than 10. So mobility in case of surfacial environment can be determined by coefficient of migration. So what is coefficient of migration? So coefficient of migration can be defined as as K, which is 100 into M by A, where M is the concentration of elements in drainage water, A is the total mineral residue in water, and N is the concentration of element in the rock. याको कहती coefficient of migration. तो होची M आदा कौन ना concentration of element in drainage water. जो आमे जो water drain ही किया होची तो सेठी तार element particular element of concentration is M. Then A is the total mineral residue in the water. तो से water रे total mineral residue केते होची सेटा को कहती A and N is the concentration of element in the rock. So if K is greater than 10, it is highly mobile. K is 1 to 10, it is moderately mobile, and K is 0.1 to 1, it is less mobile in nature. So here is a table. Here you can see if K is greater than 10, then in case of oxidizing condition, pH 5 to 8, chlorine, sulfur, molybdenum, and boron is mobile. In case of oxidizing pH less than 4, chlorine, sulfur, boron is mobile, and in case of reducing condition, only chlorine is mobile. Similarly, K is 1 to 10 है oxidizing condition में calcium, sodium, lithium, magnesium एगुड़ा mobile. सेमती reducing condition रे भी lithium, manganese, barium एमाने कौन था mobile form में था. In association of elements, generally in geochemical survey,
and elements measured to detect the ore body is referred to as indicator elements. तुम ore body को generally determine करिया ପାଇଁ जो कौन करो ना एलिमेंट को मेजर करो तब कौन सी इंडिकेटर एलिमेंट्स. In many situations, the indicator elements is the same as the ore deposits. Example, gold deposits. Suppose तुम्हें gold खोजुଛ कि copper खोजुଛ तुम्हें कौन करिବ ना जो sample collect करछो तुम्हें सेठी gold देखिबो किंबा कौन करिବ ना copper को खोजुछ. It is same as ore deposits, but in some of the cases कौन थाए ना से तुम्हें जदि gold खोजुछ तुम्हें gold पाइबो नाही किंतु environment by in case of nature generally two or more metals generally present with association with each other. So some of the elements may have comparably similar mobility in wide range of geochemical environment in any earth processes. These are called universal association. तो जो एसोसिएशन थाए कौन पाई थाए ना सेमानकर जो मिनरल्स मानक सेम मोबिलिटी थाए डिफरेंट विथ ए वाइड रेंज ऑफ जियोकेमिकल एनवायरनमेंट रे सेति बहुत ही मिनरल समाने सांग होइकी मिलती जेमिति कि पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम एल्युमिनियम गैलियम देन जो सिलिकॉन जर्मानियम जिरकन हाफनियम नियोबिलियम टाइटानियम आरईएस मिनरल एमाने कौन करती ना परस्पर सहित एसोसिएटेड होइकी मिलती सब बळे आउ सेमाने कौन थांती ना having same mobility in in variable geochemical environment or wide range of geochemical environment रे तांको mobility same थाए तो सेति पई हमें पर्टिकुलर से नो मिनरल नो पाइकी अन्य मिनरल भी जदि हमें पाउछंती ताको हमें कौन करि परिबा टू से तार कंसंट्रेशन जानि परिबा मिनरल प्रेजेंट अछि ना नाही जेमिति मैग्नेटिक सल्फाइड डिपोजिट्स रे जनरली कपर निकेल आउ पीजी मिनरलाइजेशन सांग होइकी मिलंती तुमे जदि कौन करछो ना जनरली हमें जानछंती से होची पीजी मिनरलाइजेशन गोटे जगह पाउछंती किंबा कपर निकेल सल्फाइड्स पाउछंती गोटे जगह रे आमे सेठी कौन करले ना पीजी पई भी खोजी परिबा सेमते वीएमएस डिपोजिट्स रे ना कपर जिंक पांती या porphyry रे ना हम कहिथि porphyry कपर आ porphyry मोलिब्डेनम एका प्रोसेस रे डिपोजिट्स फॉर्म हेतांती जदि आमे कौन करछंती ना porphyry कपर पाउछंती आमे सेठी porphyry मोलिब्डेनम पई भी खोजी परिबा that is called association of elements. Then pathfinder elements. तो pathfinder elements pathfinder माने कौन तुम्हें कौन क्वेश्चन गोटे मिनरल पाइले से अन्य मिनरल खोजिबार रास्ता देखि दिए तो कहती pathfinder elements. If the ore elements is difficult to analyze, then another elements associated with the ore will be useful, which is referred to as pathfinder elements. So generally, for the example, for vein type of gold ore, in case of आमे कौन करबा जदि vein type of gold अछि ओ डिपोजिट्स आमे पाउछंती देन आमे कौन करबा ना होछि जदि आर्गन आमे ता वॉल रॉक और रेसिडुअल सॉइल में जदि आर्गन पाउछंती आमे कहि परिबा जे vein type of gold deposits अछि. Similarly गोटे कोन ना वॉल रॉक बा सॉइल जदि आमे मर्क्यूरी पाउछंती तो कहि परिबा जे कॉम्प्लेक्स लेडजिंग बा सिल्वर डिपोजिट्स अछि. In case of कौन ना एपिजेनिक सल्फाइड डिपोजिट्स जदि आमे सेलेनियम पाउछंती त आमे कहि परिबा जे एपिजेनिक सल्फाइड डिपोजिट्स अछि. सेमिति गला सिल्वर बेरिंग गोल्ड जदि आमे सिल्वर पाउछंती आमे कहि परिबा जे गोल्ड डिपोजिट्स अछि किबा SO4 जदि पाउछंती आमे कहि परिबा सल्फाइड गोल्ड डिपोजिट्स अछि. So pathfinder elements are the elements which are associated present in association of that element, and these are used if the ore elements is difficult to analyze. The ore elements हमें पाऊ नाते तो then pathfinder elements पाउचंती तो हमें कोई परिबा से जो होची ए डिपोजिट्स ता थाई पारे बोली. This is called pathfinder elements.